who will tell me the definition of isotopes? Anyone, please? What is the definition of isotopes? Sir, isotopes are the elements which have same number of protons, but उनका neutron number अलग होता है. Very good, very good. So atoms of the same element having same atomic number but different mass number. Not neutron, but different mass number. Neutron भी बोल सकते हो आप लोग. That is nothing but you can say isotopes. Okay. Furthermore, will anyone tell me the definition of isobars? Anyone, please? It has same mass number and different number of protons and neutrons. Same mass number, different number of protons and neutrons. Very good. These are called isobars. Will anyone tell me what is the concept of nuclear mirror nuclei? Yes, mirror nuclei, please. Anyone? Sir, they differ by one number. थोड़ा सा क्लोज है, एक छोटा सा वर्ड उसके अंदर मिसिंग है, उसके कारण मार्क्स नहीं मिलेगा. वो कौन सा है? 70% definition right है आपका, 90% definition right. The isobar, which is differ by one number. I didn't ask isobars. I asked nuclear mirror nuclei. Mirror nuclei definition आपने right बोला, बस उसके अंदर एक वर्ड का करेक्शन करना है यहाँ पे. Mirror nuclei are the nuclides which differ just by proton or neutron. One proton or one neutron. They differ by just one proton or one neutron. That is, you can say mirror nuclei. Okay. Next is you can say isotones. Is there anyone who will tell me what are the isotones? Yes, boys. I'm not hearing any of the voice right from boys. So most of the voice comes from the girls. Yes, anyone? What is the concept of isotones? No? ऐसा नहीं, come on. पता है आपको? So isotones are atoms having the same number of neutrons but a different number of protons are called isotones. Yeah, but वहाँ पे atom use नहीं करेंगे हम लोग, nuclide word use करेंगे, है ना? Nuclear chemistry में generally atom word use करते नहीं हम लोग, nuclide word use करते हैं. So these are the nuclides having same number of neutrons but different number of protons and mass number. Okay, very good. Very good. And then last definition उस कड़ी के अंदर का जो last definition देखा था वो था nuclear isomers. So is there anyone who will tell me what are the nuclear isomer concept? Yes, nuclear isomers. Sir. Yes. Sir, nuclear isomers have same number of protons and neutrons, but they differ in their energy state levels. Very good. Is it Aditya? Yeah, Atharv, sir. Atharv, very good. Welcome, Atharv. Very nice definition. That is, you can say nuclear isomers. Nuclear isomers are having same number of protons, neutrons, and mass number. Just they differ by their energy state. Energy का difference होता है, and that state is also called as meta state. तो कोबाल्ट का example हमने लिया था. तो कोबाल्ट 60, दोनों भी कोबाल्ट 60 है. Atomic number same है, neutron number same है, mass number same है. Just energy का difference है. That is noted by small m. उसके अंदर लिखा जाता है. So very good. Hope so. बाकी जो listeners यहाँ पे हमारे सारे, उन्होंने शायद ये definition सारे सुने होंगे. एक ने definition बोला है, लेकिन it's very good sign to have the interaction for this definition. हमारा recall होता है. Otherwise क्या होगा कि मैं एक ही इसमें चलता जाऊंगा आगे, फिर उसका बैकलॉग गिरता जाएगा. मुझे लगता है थोड़ा सा इस टाइप का माहौल बनना चाहिए, इंटरेक्शन का, डेफिनेशंस का, रिकॉल का, ओरल का. सो ये हमारा थोड़ा सा इंटरेक्टिव लेक्चर बन सकता है फिर, ठीक है ना? कोई बात नहीं. वेरी गुड. उसके बाद देखा हमने दैट इज देयर आर फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी. उसमें से सबसे पहला था ऑड इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. हम अच्छी तरह जानते हैं if protons and neutrons all are even, then most of the elements are very stable in nature. That number is almost equal to 165 elements here in the periodic table. Then elements having even number of protons and odd number of neutrons are almost 55 which are stable in nature. Elements having
odd number of protons and even number of neutrons are 50, almost they are stable in nature. And 4 elements are there which have odd protons and odd neutrons. दोनों भी odd होते हैं. And they are also present in this periodic table. ये भी हमने उसके लिए डिस्कस कर दिया. दूसरा जो था, दूसरा जो फैक्टर था जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो. और हमने उसके अंदर ये डिस्कस किया था, if proton to neutron ratio is almost equal to 1, then most of the elements having this type of ratio are stable in nature. And the elements or nuclides which do not have this ratio is equal to 1, that is either less or more than that, these are unstable in periodic table. They are unstable in nature. That is also what we are seeing. So proton to neutron ratio also matters. This is also one of the important factor. उसका पूरा graphical representation हमने कल डिस्कस किया था. तीसरा फैक्टर डिस्कस किया था मैजिक नंबर. Some of the nuclides are present here in periodic table or in the nature, which are having a particular magic number, either their protons, either their neutrons, either their mass number, whatever is that, 2, 8, 18, 36, 50, 84, like these are the magic numbers. These elements are found to be very stable in nature. So stability depends upon this magic number too again. और फोर्थ वाला फैक्टर जो हमने उसके अंदर डिस्कस किया था, that was nothing but the nuclear potential. Nuclear potential is what? Nuclear potential is what? हम अच्छी तरह जानते हैं कि एटम के दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द एटम. Or nucleus is very, very small part compared with all structure of an atom. The diameter of atom is 10 to the minus 15 meter. We have discussed together. Now the thing is that all protons and neutrons are present in the nucleus, which is a very small part of an atom compared with total structure of an atom, total volume of atom. This volume of nucleus is very, very small, where protons and neutrons are actually present, and they are called the nucleons. The thing is that its being is a very small area. And protons are positively charged, neutrons are neutral. How these particles are held together in the nucleus? Because normally, हमारे daily routine lab में बाकी सारे concepts में हम देखते हैं कि there is a Coulombic force of attraction, electrostatic force of attraction. और वो होता क्या है? तो वो एक जाना माना उसका concept ये है कि opposite charges has the repulsion and like charges has the repulsion. Opposite charges has the attraction. Sorry, opposite charges has the attraction and like charges has the repulsion. This is very important concept of electrostatics, and that is the Coulombic force of attraction. So opposite charges attract each other and like charges repel each other. तो अगर यही concept हम न्यूक्लियस को लागू कर सकते हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस को लागू करते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं. तो देयर शुड बी रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, और प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन होता है तो न्यूक्लियस शुड नॉट एग्जिस्ट. न्यूक्लियस शुड नॉट एग्जिस्ट. न्यूट्रॉन्स तो वैसे भी न्यूट्रल है. हाउ दे आर हेल्ड टुगेदर विद प्रोटॉन्स देन? That was the big question, and scientists come to the conclusion that the Coulombic force of attraction, electrostatic force of attraction, is not applicable to the nucleus. Nucleus has its own forces, own interacting forces. So every nucleus has proton to proton attraction. हमें देखा है इसके अंदर, you can say proton proton has the attraction. Though protons are positively charged, proton proton has the attraction. Neutron neutron has the attraction. Proton neutron has the attraction. And the resulting force of this one is nothing but the nucleus, and all particles are held here into the nucleus, and that's why that exists, and that is nothing but the nuclear potential. There is some amount of energy which is required to break down these particles, and that is nothing but the nuclear potential. तो यहाँ तक हमने कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था. अभी देखिए आपके रिकॉल लेने के लिए मुझे कम से कम 12 to 13 मिनट्स लगे. आप थोड़ा जल्दी बोलते थे तो वो रिकैप थोड़ा सा जल्दी हो जाता था, लेकिन आप थोड़ा डिले बोलते. कोई बात नहीं, कल से थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा सा जल्दी रिकैप देने की कोशिश कीजिएगा. It would be easy. ठीक है. Now we are turning towards next topic, that is, you can say, one of the important factor called, you can say, binding energy. So it's very important, binding energy. Okay, जैसे यहाँ पे ये देखे हमने, उस तरीके से इसके आगे का पार्ट है binding energy. So binding energy हमें डिस्कस करना है. ठीक है, let's move. So very important concept. It may be fifth concept called as binding energy. BE. Okay. नॉर्मली हम लोग बी बात करेंगे तो मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ऐसा होता है. यहाँ पे बी का मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है ना. सो बी, आप में से बहुत सारे लोग एस्पिरेंट्स होंगे इंजीनियरिंग के, तो बी बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बी का मतलब है बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ऐसा उसका मतलब होता है. ठीक है. अभी जो हमने देखा न्यूक्लियर पोटेंशियल, ये इसी का सब टॉपिक है, इसी का पार्ट है वो एक्चुअली. व्हाट इज दिस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी? अब देखिए, ऑलरेडी वी हैव सीन दैट. So this is the structure of atom where we have this nucleus and electron revolves around the nucleus in circular orbit. So this is nothing but the nucleus.
and this nucleus has nothing but the protons and neutrons. This nucleus has protons and neutrons. Now that's why they are also called nucleons. उन्हें nucleons भी कहा जाता है. Okay, just a minute. Excuse me. Okay, sorry. So now this is the structure of atom, in which we have this nucleus, which is centrally situated, highly dense area called the nucleus, and electrons revolves around the nucleus in circular orbits. Whereas protons and neutrons are present in the nucleus. और इसके अंदर जो forces present होते हैं, ये forces are nothing but you can say proton has attraction for the proton, neutron has attraction for the neutron, and proton has attraction for the neutron. These are the three attractive or interactive forces which may be present in an atom. This may be attractive forces which are present in an atom. Proton, proton, there may be attraction, there may be repulsion. Neutron, neutron, there is attraction, there is a repulsion. And this is proton, neutron, there is attraction. Now, resulting force of this one is a attractive force. देखिए, एटम में भी हमने ये डिस्कस किया है कि एटम के अंदर भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी होते हैं. अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं, लेकिन कौन से फोर्सेस ज्यादा रहेंगे आपके 11th स्टैंडर्ड में नेचर ऑफ बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग नाम का एक चैप्टर है जिसके अंदर इसका जिक्र आएगा, जिसके अंदर ये आप डिस्कस करेंगे. व्हेन टू एटम अप्रोचेस ईच अदर, दो एटम जब एक साथ आते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो उनके बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस और कुछ रिपल्सिव फोर्सेस भी तैयार होते हैं. दोनों फोर्सेस होते हैं. So there are some attractive forces, there are some repulsive forces. But result किसका ज्यादा है? Attractive forces ज्यादा है या repulsive forces ज्यादा है? उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होगा या वो ब्रेक होगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. उसी तरीके से ये जो पार्टिकल्स है, how these particles are held together in the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर वो पार्टिकल रहते कैसे? उनके बीच में कौन से अट्रैक्टिव फोर्सेस है, कौन से रिपल्सिव फोर्सेस है? अभी कुछ फोर्सेस हमें पता है, कुछ फोर्सेस हमें पता नहीं है, बिकॉज ये साइंस है. साइंस ऐसा कभी नहीं कहता कि एवरीथिंग इज नोन टू अस. साइंस का जर्नी है कि जितना पता करना है वो पता करते चलिएगा और रिसर्च करते चलिएगा, लाइक दैट. तो न्यूक्लियस के अंदर दीज पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर. तो देयर मे बी सम रिपल्सिव फोर्सेस, देयर मे बी सम अट्रैक्टिव फोर्सेस, बट अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस, सी अट्रैक्टिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्सेस, attractive forces are greater than repulsive forces, then particles will be held together. और दूसरा केस हो सकता है कि attractive forces are less than repulsive forces. repulsive forces. तो अभी देखिए, यहाँ पे repulsion ज्यादा है, यहाँ पे attraction कम है. repulsion ज्यादा है, तो इस केस में पार्टिकल एक साथ रहने की कोई चांसेस नहीं है, कोई चांसेस नहीं है. सिर्फ हम किसी के साथ एक फ्रेंडशिप का भी एग्जांपल लेते हैं. मतलब आपका कोई दोस्त है, अच्छा दोस्त के साथ जितना अच्छा आपका बॉन्डिंग होगा, जितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग अगर ज्यादा है तो उसके साथ बॉन्डिंग बनेगा आपका. अगर आपका रिपल्शन ज्यादा है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, तो बॉन्ड बनने की कोई चांसेस नहीं, फ्रेंडशिप बनने की कोई चांसेस नहीं होते. उसी तरीके से यहाँ पे. सो दिस इज यू कैन से अट्रैक्टिव फोर्सेस लेस है और रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है. तो इस केस में वो पार्टिकल एक साथ रहने की कोई चांसेस नहीं है. इस केस में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है और रिपल्सिव फोर्सेस कम है. मतलब attractive force exceeds repulsive forces and here are the chances particles will be held together. तो न्यूक्लियस के अंदर कई सारे forces interact होते हैं. There are some attractive forces, there are some repulsive forces, but the result is that attractive forces are greater than repulsive forces and that's why particles are held in the nucleus. तो ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का ये है. मतलब overall न्यूक्लियस तभी एग्जिस्ट हो सकता है when attractive forces exceed the repulsive forces. तो इसके अंदर दोनों forces act होते हैं, ये होते हैं. Now, अगर हमें ये पार्टिकल्स न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट है, अट्रैक्ट वो एक साथ रखे हैं, उन्हें अगर ब्रेक डाउन करना है या अलग-अलग पार्टिकल में ब्रेक डाउन करना है, तो वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी. ये पार्टिकल जब इकट्ठा आते हैं न्यूक्लियस के अंदर, मानो हम ऐसा मानते हैं कि दिस इज अ बिग न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये प्रोटॉन्स है, और उसके अंदर शायद हम ऐसा करते हैं कि दीज आर द न्यूट्रॉन्स, ये ऐसे न्यूट्रॉन्स है. ओके, ये न्यूट्रॉन्स है. अभी इमेजिनरी डायग्राम है, ये इमेजिनरी डायग्राम है, ये एग्जाम में मत लिखिएगा ये डायग्राम. ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इमेजिन करके डायग्राम आपके सामने बता रहा हूँ. ये पूरा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर ये सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इकट्ठा रखे गए हैं. सो मानो दीज आर द प्रोटॉन्स एंड दीज आर द न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स है. इनके बीच में कई सारे फोर्सेस इंटरेक्ट होते हैं. कुछ रिपल्सिव फोर्सेस है, कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस है, कुछ हमें आज ज्ञात है, कुछ ज्ञात नहीं है, दोनों मिला के. लेकिन ये पार्टिकल इकट्ठा रखे गए हैं, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर देन द रिपल्सिव फोर्सेस एंड दैट्स व्हाई पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर. थिंग इज दैट अगर हमें इस न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करना है, सारे पार्टिकल को अलग-अलग करना है, तो वी हैव टू सप्लाई देना. एंड द एनर्जी नीडेड टू सप्लाई दिस वन इज नथिंग बट द बाइंडिंग एनर्जी. दिस इज नथिंग बट द बाइंडिंग एनर्जी. या फिर
दूसरे वर्ड्स में हम ऐसा कहते हैं कि when these particles are held together, when these particles came together, energy is released. Energy is released, and this energy is nothing but the concept binding energy. उतना एनर्जी रिलीज होना जरूरी है बाइंडिंग होने के लिए. हम घर में चाय बनाते हैं, हम चाय बनाते हैं तो चाय तो बॉईल होना पड़ेगा ना. चाय के अंदर मतलब आपने पानी डाला, मिल्क डाला, पाउडर डाला, टी पाउडर, टी डाला, टी पाउडर डाला, सब डाला, और चाय हमने बॉईल नहीं किया तो चाय अच्छी तरह बनेगा. एक मिनिमम बॉइलिंग उसके लिए जरूरी है. उसी तरीके से अगर ये पार्टिकल्स को हमें ब्रेक डाउन करना है तो कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, उसके सिवा ये पार्टिकल दूर नहीं जाए. क्योंकि ये पार्टिकल जब इकट्ठा आए थे इन्होंने कुछ एनर्जी रिलीज किया था. दैट एनर्जी, so amount of energy released whenever nucleons came together, these are called as nucleons. देखिए यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, nucleons. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एज nucleons. जैसे कि हम पुणे में रहते हैं तो हम कहते हैं पुणे का, मुंबई में रहते हैं तो मुंबई का. तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स रहते कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर. उन्हें क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियॉन्स. So these particles stay into the nucleus, occurs into the nucleus, and that's why they are called the nucleons. When nucleons are held together, energy is released, and that energy is nothing but the binding energy. That energy is nothing but the binding energy. That is the concept of binding. So, for the definition, everyone, what is binding energy? The amount of energy released when nucleons are held together. That is called the binding. या फिर उल्टा, the amount of energy required to break the nucleons into the particles. Break the nucleons. ये सारे nucleons को break करने के लिए जो energy supply करना पड़ता है, that is nothing but the binding energy. Clear with this? So hope everyone got the definition. That is amount of energy released whenever nucleons are held together. मतलब protons, neutrons are held together. That is called the binding energy. या फिर amount of energy required to break the particles into the nucleons is called the binding energy. So that's called the binding energy. Okay. Now there is one important concept. आपने शायद आइंस्टाइन का इक्वेशन पढ़ा, आइंस्टाइन का इक्वेशन पढ़ा. तो आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या कहता है? दैट इज एनर्जी इज कैलकुलेटेड E is equal to mc². E is equal to mc². जिसके अंदर हम अच्छी तरह जानते हैं दैट्स E. This E nothing but the energy. E nothing but the energy. What is this m? M is nothing but the mass. And what is this C? C is nothing but the velocity of light. Velocity of light. So this is what we can say. So this is very important equation given by Einstein. E is equal to mc². इसका मतलब ये होता है energy can be converted into mass और mass can be converted into energy. ये इस इक्वेशन का मतलब E is equal to mc². बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसके कारण ये इक्वेशन अगर नहीं होता था तो एटम बम का निर्माण नहीं होता. इस इक्वेशन के कारण एटम बम का निर्माण होता. And that's why we can say E is equal to mc². E stands for energy, M stands for mass, and C stands for velocity of light. And this equation has this equation played a very important role while making a nuclear atom bomb. Because of this equation only this is because energy can be converted into mass, mass can be converted into energy. This is the equation which is mainly applicable to the nuclear chemistry, that is nucleus. Nucleus is very important. Binding energy वही तो है. क्या है binding energy? Amount of energy released when nucleons are held together. या फिर amount of energy required to break the nucleons. That is nothing but the binding energy. So this E is equal to mc² equation given by Einstein. अभी इसके अंदर होता क्या है कि ये एनर्जी इज इक्वल टू मास. तो मास कौन सा यहाँ पे कैलकुलेट करें? एटम के केस में कौन सा मास हम लोग कैलकुलेट करें? तो उसके अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया है कि डेल्टा एम इज नथिंग बट द मास डिफेक्ट. डेल्टा एम इज इक्वल टू एम डैश माइनस एम. ऐसा एक इक्वेशन है. अभी ये क्या है? इसके अंदर देखिए डेल्टा एम क्या है? दिस डेल्टा एम इज नथिंग बट द मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट. Okay, then this m dash is nothing but the calculated mass. M dash is nothing but the calculated mass. This m is nothing but the theoretical mass. The observed mass, you can say, better observed mass. Observed mass. ये इस तरीके से आता है. ठीक है? So that is what it is. So scientists put for the concept called as delta m, that is mass defect. Mass defect क्या होता है? तो calculated mass minus observed mass of the particle. अभी ये कैसा है? अब देखिए हम किसी भी एलिमेंट का एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे कार्बन का एग्जांपल लेते हैं. मैं बार-बार आपको कार्बन का एग्जांपल दे रहा हूं कि वो सिंपल केस. कार्बन 6 मास नंबर 12. इसके अंदर हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स कितने हैं? इट हैज 6 प्रोटॉन्स. न्यूट्रॉन्स कितने हैं? इट हैज 6 न्यूट्रॉन. ओके. और टोटल पार्टिकल्स कितने हैं? तो 8 इज नथिंग बट डिफरेंस है 12. दैट इज मास. ये. सो कार्बन हैज दिस वन. कार्बन हैज दिस वन. और इसका फार्मूला हम अच्छी तरह जानते हैं. दिस फार्मूला A is equal to Z plus N. A is equal to Z plus N.
ये ऐसा फॉर्मूला समझा। नाउ कार्बन न्यूक्लाइड, ये कार्बन न्यूक्लाइड 6 प्रोटॉन का और 6 न्यूट्रॉन का बना, 6 प्रोटॉन का और 6 न्यूट्रॉन का बना। तो अगर कार्बन न्यूक्लाइड का मुझे अगर मास निकालना है, दैट्स कैलकुलेटेड मास, तो पहला जो आएगा दैट इज कैलकुलेटेड मास। कैलकुलेटेड मास इज गिवन बाय m dash, ओके, कैलकुलेटेड मास इज गिवन बाय m dash, हम यहां पे ले। तो कैलकुलेटेड मास क्या होगा कार्बन न्यूक्लाइड के केस में, तो m dash मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स, सी मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने हैं 6, तो मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज z, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज गिवन बाय z, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब यहां पे क्या आएगा n, n is number of neutrons into mass of neutron, mass of neutron प्लस इसके अंदर ये क्या आता है z into mass of electron, z is nothing but the proton number and this is mass of electron, proton number क्यों, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम। कार्बन में अगर प्रोटॉन 6 है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी उतने ही रहेंगे, 6 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, याद रखिएगा। किसी भी न्यूट्रल एटम, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल एटम, किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो प्रोटॉन्स मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी न्यूट्रल एटम अगर इसके ऊपर चार्ज आता है Ca+, C+, Na+ लाइक उस केस में नहीं, न्यूट्रॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, किसी की बात करें, Na+ की बात करते तो वो कैटायन, Cl- की बात करते वो आयन, उस केस में नहीं, हम सिर्फ Cl की बात करें तो वो न्यूट्रल का, हम सिर्फ आयन की बात करें न्यूट्रल क्या। तो किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं दैट्स व्हाई प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, बोथ आर बैलेंस्ड, इसलिए टोटल एटम इज एज न्यूट्रल। मानो इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स है, मतलब +6 चार्ज है प्रोटॉन के कारण, तो इसके अंदर -6 होता है बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो +6 ऑफ प्रोटॉन्स इज न्यूट्रलाइज्ड बाय -6 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट्स व्हाई एटम एज होल इज न्यूट्रल, एटम एज होल इज न्यूट्रल। ये फंडामेंटल कांसेप्ट, बेसिक कांसेप्ट, और इसीलिए mass of atom, total mass of atom is mass of protons into total number of protons, mass of electron into total number of neutrons, so mass of electron into total number of neutrons, electrons है, but ये electron का mass बहुत ही negligible होता है, वो अगर हम हटा भी देंगे तभी भी चलता है। So calculated mass will be this one, that is calculated mass m dash is equal to, that is z into mass of proton plus n into mass of neutrons, yeah, and this is nothing but the calculated mass, this is nothing but the calculated mass, okay। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि कार्बन की अगर बात करते हैं तो कार्बन हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि अलग से 6 प्रोटॉन लेते हैं, अलग से 6 न्यूट्रॉन लेते हैं और उनका वेट करते हैं, तो दैट इज नथिंग बट द वेट ऑफ कार्बन, दैट इज नथिंग बट द मास ऑफ कार्बन, बराबर है ना, बिकॉज़ दैट इज कैलकुलेटेड, क्योंकि कार्बन इज मेड अप ऑफ 6 प्रोटॉन और कार्बन इज मेड अप ऑफ 6 न्यूट्रॉन, तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का जो भी मास होगा वो अगर ऐड करते हैं तो दैट इज नथिंग बट द मास ऑफ कार्बन, जो भी आएगा। अभी कार्बन जब बनता है, कार्बन न्यूक्लाइड जब बनता है तो उसका मास ये करते हैं, कार्बन न्यूक्लाइड का मास होता है वो उतना नहीं आता, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास जितना आता है उतना नहीं आता, वो थोड़ा सा कम आता है। तो कम कैसे, तो कम कैसे, जैसे कि अब देखिए मेरे पास सामने पेन, ओके, अभी इस पेन की बात करते हैं, इस पेन में 2-4 स्पेयर पार्ट्स है ना, पेन में अभी ये ढक्कन दिखता है आपको, फिर ये निकल जाएगा, फिर ये निकल जाएगा, 2-4 स्पेयर पार्ट है। तो अगर मैं इस ढक्कन का एक अलग से वेट लेता हूँ, कैप का इसका अलग से वेट लेता हूँ, मानो ये 2 ग्राम है, ये 10 ग्राम है, कुल मिला के इसका वेट कितना आना चाहिए 12 ग्राम, कुल मिला के इसका वेट कितना आना है 12 ग्राम। तो अगर इसका वेट कैप का 2 ग्राम है, इसका वेट 13 ग्राम है, कुल मिला के 12 ग्राम आना चाहिए। कार्बन का क्यों ऐसा है, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, क्योंकि कार्बन इज मेड अप ऑफ 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो इनका जो मास है वो मास ऑफ कार्बन चाहिए, दैट इज नथिंग बट द कैलकुलेटेड मास, कैलकुलेटेड मास। कार्बन एटम बनने के बाद, कार्बन न्यूक्लाइड बनने के बाद कार्बन का मास ऑब्जर्व किया जाएगा, जैसे कि अभी स्ट्रेंथ बनने के बाद इसका मास दिया है, दिस इज नॉट इक्वल टू 12 ग्राम, 12 से थोड़ा कम है तो 11 ही हो जाता है, 11.5 हो जाता है, 0.5 कहीं ना कहीं तो आया, वो कहां है, दैट इज नथिंग बट दिस मास। ये पार्टिकल जब इकट्ठा आते हैं तो उनका मास कम हुआ, जो कि एक्सपेक्टेड कितना था m डैश, m डैश इतना एक्सपेक्टेड था, बट उतना है नहीं, उतना है नहीं। तो दिस इज theoretical mass, theoretical mass, और ऑब्जर्व मास की बात करते हैं, ऑब्जर्व मास इज नथिंग बट m, is nothing but m, that's what we can say delta m is equal to m dash minus m. So this is the calculated mass with the particles and this is the observed mass when the nuclide is formed. तो न्यूक्लाइड फॉर्म होने के बाद ये मास है और कैलकुलेटेड मास कितना आता है, मतलब सारे स्क्वायर पार्टिकल का करीब इतना मास आता है, और जब
न्यूक्लियाइड बनता है तो इतना मास आता है, ये ज्यादा होता है, ये कम होता है, एंड दिस डिफरेंस इन द डेल्टा एम कॉल्ड मास डिफेक्ट। आइंस्टाइन को यही तो सवाल आया, आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट के दिमाग में यही सवाल आया था कि यार there is a concept called as mass defect, there is a concept called as mass defect, तो ये गया था जबकि कार्बन बना इतने पार्टिकल का, सारे पार्टिकल ऐड करेंगे तो मास उतना होना चाहिए m डैश इतना, वो तो हो नहीं रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, तो बाकी मास कहाँ गया? some mass is lost in the form of, and that is nothing but the delta, that is nothing but the delta, that is called as mass defect। तो यही देखा हमने बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन देखा था, ये जरूरी है, ये मास डिफेक्ट होना जरूरी है, when particles came together they release some energy, और एनर्जी आता कहाँ? यही तो सवाल था, एनर्जी आता कहाँ? ये मास कैन neither be created nor be destroyed, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, तो एनर्जी आया कहाँ से? some mass should be converted into energy, some mass should be converted into energy, and that is nothing but the binding, that is nothing but the binding, इतना एनर्जी बाहर आना जरूरी है, that mass डेल्टा एम इतना एनर्जी बाहर आना जरूरी है। अभी डेल्टा मास को हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना है, एनर्जी का फॉर्मूला ये है, एनर्जी का फॉर्मूला E = mc² है, तो हमें लिखना पड़ता है कि इस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा, तो E = डेल्टा m कितना है, मास मतलब मास which is lost is nothing but the delta m, so instead of m we can put delta m into c², c is the velocity of light, ये आता है। अभी केमिस्ट्री में मास जो है वो यूनिफाइड मास मेजर किया जाता है, केमिस्ट्री में मास इज, हम जनरली मास किलोग्राम ग्राम में मेजर करते हैं, है ना, बट हमने ऑलरेडी सम बेसिक कांसेप्ट केमिस्ट्री में देखा कि मास इज मेजर्ड इन यूनिफाइड मास, मास इज मेजर्ड इन यूनिफाइड मास, वन यूनिफाइड मास, वन यू unified mass, and this unified mass मतलब atomic mass unit, this u indicates the unified mass, तो वैसे जो लोग सब बेसिक कांसेप्ट केमिस्ट्री देखते हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं थे वो याद रखें, u denotes unified mass, उसका मतलब है one atomic mass unit, और one atomic mass unit is equal to 1.77 × 10⁻27 kg, 1.77 × 10⁻27 kg, कुछ बुक में आपको 1.66 भी मिलता है, कुछ बुक में 1.66 मिलेगा, तो 1.6 × 10⁻27 kg इतना मास होता है, वन यूनिफाइड मास, 10⁻27 kg प्लस मत कीजिएगा, प्लस करेंगे तो बहुत ज्यादा होगा, माइनस है मतलब 0.000027 टाइम्स इतना छोटा मास है, वन यूनिफाइड मास ये है, तो डेल्टा m इसमें कन्वर्ट होगा, डेल्टा m यूनिफाइड मास में कन्वर्ट होगा, दैट हैज टू बी यूनिफाइड मास, और c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट हम अच्छी तरह जानते हैं, so energy is equal to one unified mass, that is delta m one unified mass into c is 3 into 8 into 3 into 10⁸ meter per second, this is the velocity of light, ठीक है, but the unit of energy, binding energy, nothing but the million electron volt, इसमें दिया है million electron, and ये सारा कन्वर्ट करेंगे हम लोग one unified mass को कन्वर्ट करते हैं, that is 931, तो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला आता है, बाइंडिंग एनर्जी E is equal to delta m into 931 million electron volt, so this is the final form here. See यहाँ पे क्या किया हमने, this one unified mass and 3 into 10⁻³ meter per second इन्हें कैलकुलेट किया और वो एनर्जी को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कन्वर्ट कर दिया, this energy has been converted into million electron volt, and this million electron volt is nothing but the 931, वो कितना आता है 931 इतना आ जाता है, so finally E is equal to delta m into 931, हम अगर पुट करते हैं तो we get a binding energy for that particular atom or particular nuclide, किसी भी न्यूक्लाइड का बाइंडिंग एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है तो उसका मास डिफेक्ट पुट करना है, that has to be divided by 931 million electron volt will get the binding energy, so binding energy is the necessary energy which is released when nucleons are held together, और वो एनर्जी आता कहां से, because of this mass loss, this is delta m, this is delta m, okay, mass loss, जब तक मास लॉस होता नहीं तब तक वो एनर्जी रिलीज होती है। उसका एक छोटा एग्जांपल हमारे डेली रूटीन में करेंगे, हम लोग टू व्हीलर चलाते हैं, हम फोर व्हीलर चलाते हैं, हमारे टू व्हीलर फोर व्हीलर के अंदर जब तक हम पेट्रोल नहीं पुट करते तब तक वो नहीं चलता, पेट्रोल पुट नहीं करते तब तक नहीं चलता, और हम अगर नॉर्मल गाड़ी के अंदर पेट्रोल पुट करते हैं 50-60 किलोमीटर चलाते हैं और फिर पूछते हैं हमारा 1 लीटर पेट्रोल कहाँ चलता है, अगर हमारी गाड़ी 60 का एवरेज देती है तो हम जानते हैं कि 60 किलोमीटर चले जाएंगे तो 1 लीटर पेट्रोल हमारी गाड़ी के अंदर खत्म हो जाएगा, तो हमारा पेट्रोल एक मास के फॉर्मेट में जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो दिस इज delta m mass defect which is converted to the energy आता है, some mass is lost तब एनर्जी है। हमारी गाड़ी चलती कैसे है, 1 लीटर पेट्रोल is lost then 60 किलोमीटर हम लोग चलते हैं,
Mass loss to energy. Energy अपने आप नहीं है, because energy can neither be created nor be destroyed. So that is what we can say. This is called binding energy. Also, everyone got it? So we have the concept of binding energy. Binding energy है क्या? Binding energy is the amount of energy which is required or which is released when nucleons are held together. And in order to calculate the binding energy, we have to have this equation. We have the Einstein. This is called Einstein equation. E is equal to mc square. E stands for energy, M for mass, and C is for velocity of light. But thing is that when we come to the nucleus at that time, nucleus is very small. And if we have this calculated mass of nuclei, then calculated mass is the mass of proton plus mass of neutron यहाँ पे निकाला है, and mass of electron. Mass of electron negligible से हटा दिया तो भी चलता है, लिया तो भी कोई फर्क नहीं गिरेगा, नहीं लिया तो भी कोई फर्क नहीं है, because इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत छोटा मास है, because प्रोटॉन का मास अगर 1 ke है तो इलेक्ट्रॉन का मास 0.00055 ke, तो बहुत छोटा है. So electron हटा दिया तो मिलेगा, तो total mass of proton, total mass of neutron, that means the calculated mass of an atom. So if we find the calculated mass of an atom and we have the observed mass of an atom, then हम जानते हैं calculated mass is greater than the observed mass. मतलब जब न्यूक्लियड बनता है तो मास कम होता है, और वो कम क्यों होता है? Because some mass is lost, that is called mass defect. So mass defect is amount of mass lost when nucleons are held together, and that is correlated to the energy. So in order to calculate the energy, this mass defect has to be multiplied by c square. And ये अगर हम mass defect unified mass में calculate करते हैं तो 1 unified mass में calculate करते हैं तो energy comes to be 1 million electron volt. So this factor 1 unified mass into 1.6 and this 3 into 10 to the power multiply करते हैं तो this converted to million electron volt, because the unit of energy, binding energy is million electron volt. So E is equal to delta M into 91 million electron volt. This is the formula with which can calculate the binding energy. Got it, everyone? So that is what we can say binding energy concept, and this energy is important to have this. Yeah. So hope everyone got it. Now we have to calculate binding energy for nuclear. Okay. Okay. So वो उसी के अंदर का पार्ट है. 6. Binding energy for nucleon, which is noted by B cross B bar या B bar. इसके पहले जो दिखा हमें बाइंडिंग एनर्जी था वो B से दिखाया जाता है. So instead of E, we can write here BE. Okay, E, BE or E. That is binding energy. Binding energy noted by BE या फिर E. Now this is binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon is B E bar. So B E bar is equal to binding energy upon A as a formula, because we are discussing here binding energy per nucleon. इसका मतलब क्या है कि हमने जो अभी बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे निकाला वो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे रख देते हैं, और टोटल पार्टिकल्स मतलब ये, जैसे हमने कार्बन का एग्जांपल दिखा दिया, कार्बन 6 12, जिसके अंदर Z कितना है 6, N कितना है 6 और A कितना है 12. दिस A इज नथिंग बट पार्टिकल्स. A क्या होता है? A इज इक्वल टू Z प्लस N. ऐसा तो ये फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, इंस्टेड दिस BE अपॉन Z plus N. ऐसा लिख सकते हैं हम. We can have like this one. So binding energy per nucleon. ये जो बाइंडिंग एनर्जी हमने कैलकुलेट किया था, ये बाइंडिंग एनर्जी वो सारे पार्टिकल का था, कुल मिला के जितने पार्टिकल है उनका. अगर हम ऐसा करते हैं कि ये पार्टिकल्स ए इतने पार्टिकल थे तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय ए करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको मिल जाता है. दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. और इसके अंदर 3 केसेस होते हैं. इसके अंदर 3 केसेस दो 3 ग्राफिकली आप देखिएगा. ग्राफिकली जस्ट यू कैन से हियर मास number or here binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon लेते हैं y axis पे और x axis पे लेते हैं हम लोग मास में. तो we got this one. इस तरह का ग्राफ. This is the graph. This is 8 9 million electron. Here. So binding energy million electron volt. बाकी 1 2 3 4 8 9 ऐसा बढ़ता है. ऐसा बढ़ता है. तो इसके अंदर 3 केस मिलते हैं. नंबर 1 केस लाइक दिस वन, whose binding energy मतलब binding energy per nucleon is less than 8 million electron. दूसरा आता है binding energy is equal to or is in between 8 to 9 million electron volt. 9 million electron volt. 8 to 9 electron. तीसरा जो होता है
is less than, greater than, less than. Binding energy less than 8 million electron volt. Yeah. We got 3 cases over here. आप देखिएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे निकाला जाता है? तो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय 1 करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाला जाता है. एंड व्हेन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सारे न्यूक्लाइड में स्टडी किया जाता है, जितने सारे पीरियोडिक टेबल में न्यूक्लाइड्स है 118 एलिमेंट्स है, उनके न्यूक्लाइड का अगर हम चेक करते हैं तो इस टाइप का ग्राफ मिलता है, इस टाइप का ग्राफ. सो हियर these are the elements whose mass number up to A up to 28 और 30 यहाँ तक होता है. जिस एलिमेंट का मास नंबर अप टू 28 और 30 है, मास नंबर जिस एलिमेंट का है ना, वो अगर देखते हैं हम लोग तो उनका बाइंडिंग एनर्जी लेस देन 8 है, 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन, मतलब लेस देन 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये जो मोस्ट ऑफ एलिमेंट दिखते हैं आपको यहाँ पर, जिनका मास नंबर 30 से लेकर मास नंबर 126 तक आता है, ऑलमोस्ट मास नंबर 126 तक, ये सारे एलिमेंट स्टेबल है. तो दिस इज कॉल्ड एज स्टेबल एलिमेंट. These are called as stable elements. Okay, and these are called as unstable elements. These are radioactive. Radioactive. जिनका स्टेबिलिटी यहाँ पे, जिनका मास नंबर 126 से ज्यादा है, उनकी स्टेबिलिटी यहाँ पे. So in that sense, you can say here, binding energy per nucleon matters, or how we can calculate this. So binding energy per nucleon is calculated. Binding energy divided by A, we can calculate it. It is found that binding energy per nucleon matters for the stability. So elements having less than 8 million electron volt, वो सारे स्टेबल है. यहाँ पे भी एलिमेंट है जिनका मास नंबर 28 से कम है और जिनका मास नंबर 126 से ज्यादा है. ये दो एलिमेंट ऐसे हैं, दो मतलब दो कर्व ऐसे मिलते हैं जहाँ पे जितने सारे एलिमेंट है वो सारे स्टेबल है, बिकॉज उनका बाइंडिंग एनर्जी 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन से कम है. और ये जो दिखता है, दिस इज कॉल्ड एज स्टेबिलिटी जोन, वेयर where you can say most of these elements are very highly stable in nature, very highly stable in nature. So these are stable, these are highly stable, and here onwards are the elements which are radioactive. Lead क्या है? 126. गलती से मैंने यहाँ पे stable कह दिया था. This is, you can say, lead, where onwards we have stable elements. यहाँ से आगे आपको unstable element मिलते हैं here onwards. So these elements has binding energy less than 8, but they are very stable. Their stability is explained on the basis of proton neutron ratio. These are the elements जो lead के आगे के, they are unstable in nature. Though इनका binding energy 8 million electron से कम है, but they are very stable in nature. They are unstable in nature. They are radioactive elements, and these are the elements which are highly stable in nature. That is iron, copper, aluminium. These are the elements जो यहाँ पे आते हैं, जो nature में बहुत ही stable है. That is called stability. You have with this? So that is what we can say. This is the binding energy related to this. Yeah. So thank you very much. See you tomorrow.